हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम जून 26, 2023 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एडिशन। Some of the news which we are going to focus is about the drones which India is procuring from the United States. We are going to see the procedures for its procurement and how it is going to be helpful for India for maintaining the security in the Indian Ocean region, especially in the background of rising Chinese assertion in this region. Along with that, we will also see about the Wagner Group, what were the reasons that they were marching towards Moscow and now why they have backed up, and what is the deal which they have signed with the Belarus president, that is Wagner Group's chief. Okay, so let's start with the news. So the first important news which we are going to see on the foreign page also, that is Wagner Group back to base under deal with Putin. So over here if you will see, सो यहाँ पे जो आपके एग्जैक्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहली बात तो वो आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। दैट इज हु इज द चीफ ऑफ दिस वैगनर ग्रुप। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज येवगेनी प्रिगोजिन। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, येवगेनी प्रिगोजिन, ही इज द चीफ ऑफ द वैगनर ग्रुप। नाउ he had said earlier that the Russian army, okay, they were responsible for the casualties of the soldiers, mercenaries of the Wagner group. So that's why he was marching towards the Russia's capital, that is Moscow. But now, under the new agreement with President Vladimir Putin, they have now halted their rapid advance towards Moscow. And the second important thing is that Yevgeny Prigozhin, he will move to Belarus as per the agreement he has signed with Belarusian President Alexander Lukashenko. अब ये जो पूरी कहानी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये आता है कि दैट it questions the Mr. Putin's grip on a country which he has ruled with iron hand for over 2 decades. Okay, तो यहाँ पे जो येवगेनी प्रिगोजिन है, he was the trusted ally of Vladimir Putin, and now he also revolted against the president. Next important news is after meeting Shah, Biren says he will reach out to cookies. तो यहाँ पे जो ये synopsis लिखा हुआ है, it explains everything about this news. That is, the Union Home Minister has instructed the Manipur Chief Minister to crack down on violence irrespective of the community involved. इसका मतलब that is saying कि violence चाहे Maitis करें चाहे cookies करें, he has to crack down on both of them. And then he has asked the Manipur Chief Minister to arrange a talk with women's group Mira Paibis. तो अब ये women group का नाम भी काफी important हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, that is Mira Paibis. उसके बाद मीरा पाइबिस से देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी द लास्ट पैराग्राफ, द मीरा पाइबिस दे हैव बीन लीडिंग प्रोटेस्ट एट टाइम्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम कैरिंग आउट द ऑपरेशंस। अब हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड वी हैव टू न्यूज। So we have two news related with the Uniform Civil Code, and both are related with tribals. Okay, so यहाँ पे एक न्यूज है, that is झारखंड ट्राइबल बॉडीज हैव अर्ज्ड लॉ पैनल टू ड्रॉप यूसीसी प्लान। तो ये लॉ पैनल मतलब लॉ कमीशन, एंड यूसीसी प्लान that is यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यहाँ पे देखिए, द ट्राइबल बॉडीज ऑफ झारखंड दे हैव डिसाइडेड टू अर्ज द लॉ कमीशन टू विथड्रॉ द यूनिफॉर्म सिविल कोड एज इट में पुट देयर आइडेंटिटी इन डेंजर। उसके बाद अगर आप ये न्यूज़ हम आगे भी करेंगे तो फाइन। सो यहाँ पे देखिए, नागा चर्च बॉडी दैट दे आर सेइंग नाउ दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड टू डाइल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एंड देन वी विल आल्सो बी डूइंग द सेम न्यूज़ रिलेटेड विद खासी इन मेघालय। फाइन। सो यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, एक्चुअली इनका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम है दैट इज क्वाइट सेम, दैट ट्राइबल्स दे हैव देयर ओन कल्चर, they have own customs and traditions. That's why you will see that many tribal groups, they are protected under 5th and 6th schedule of the constitution. Okay, so now if you have a uniform civil code which is under article 144, that is DPSP, part 4 of the constitution, तो यहाँ पे if there is a uniform civil code plan, so it might interfere with their customs, their traditional mores and societies setup. ठीक है, तो ये ट्राइबल्स का अलग होता है। सो हियर दे आर लाइक दे आर सेइंग दैट इट कैन एंडेंजर देयर ओन ट्राइबल कस्टम्स। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद द न्यूज रिलेटेड टू मणिपुर। तो यहाँ पे अगर आप मणिपुर का न्यूज अगर देखेंगे, सो हियर इट इज रिटन दैट मिस्टर सिंह
Okay, so Mr. Singh, that is M. Biren Singh, he was accompanied by BJP Manipur in charge Sambit Patra, Rajya Sabha member Sanjauba Leishemba, State Assembly Speaker Satyabrat Singh, Tapan Kumar Deka, who is the Director of Intelligence Bureau. अब जो मणिपुर वायलेंस है, ओके, सो लेट्स सी द मणिपुर वायलेंस. तो यहाँ पे इफ यू सी द लास्ट टू पैराग्राफ्स, okay, so you will see over here that Union Home Ministry has said that since May 3, this date is important because on this day the violence broke. So 536 cases of arson have been reported. Then 5,889 FIRs have been registered and till now 144 arrests have been made. उसके बाद पूरे मणिपुर में there are 36,000 security personnel deployed in the state. Then there are 40 IPS officers and 20 medical teams who have been sent to Manipur. उसके बाद अराउंड 4,000 वेपन्स जो थे वो पुलिस आर्मरीज से लूटे गए थे वायलेंस के दौरान. सो अराउंड 1,800 ऑफ दोज वेपन्स हैव बीन नाउ रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन. देन द होम मिनिस्ट्री हैज साइटेड 3 इंपॉर्टेंट रीजंस दिए हैं वायलेंस के. पहला क्या है? लीगेसी इशू. लीगेसी इश्यूज का मतलब कि कुकीज और मैतीज के बीच में पहले से ही जो चलता आ रहा है, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड इज इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम म्यांमार, दिस इज द सेकंड इशू. And then third is March 27, Manipur High Court order directing the state government to submit a recommendation for the inclusion of Meitei in the scheduled tribes list. तो यहाँ पे if you will see the reasons, the immediate trigger for the violence was कि Meiteis का demand है कि when Manipur became the part of the Union of India in 1949. So before that, Meiteis were recognized as tribes. But when Manipur became the part of India in 1949 and it was given the union territory status and statehood in 1972, so after 1949, Meiteis, they were not recognized as tribes. Okay, so now they were demanding the scheduled tribe status and they submitted a petition in Manipur High Court. तो Manipur High Court ने direct किया state government को कि that they should be included in the scheduled tribe list. तो इसके opposition में there was a tribal solidarity march which was organized through Chandrapur and other hill districts of the state against the high court order. तो इसके बाद जो है आर्सन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका. Then this whole violence, it has claimed 131 lives and it has displaced 60,000 people. Now the next is pricing terms of MQ-9B drone deal with US yet to be finalized, says government. सो इसके बारे में हमने पहले भी न्यूज किया था कि जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है यूएस की जो एक ड्रोन बनाती है जिसका नाम है MQ-9B. ओके, 31. सो ये जो है टोटल 31 ये ड्रोन्स जो है इंडिया खरीदने वाली है. इसमें से 31 में से इफ यू विल सी अराउंड 15 विल गो टू इंडियन नेवी एंड 8 ईच 8 एंड 8 इट विल गो टू आर्मी एंड एयरफोर्स. ठीक है, आर्मी एंड एयरफोर्स. सो इसका देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि देयर आर स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स इन सोशल मीडिया रिगार्डिंग टू प्राइस एंड अदर टर्म्स ऑफ परचेस. ओके, तो इसका देखिए फुल नाम क्या है? इट इज हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स विच डिफेंस मिनिस्ट्री हैज नाउ सबमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी. तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो होता है वो पहला स्टेज होता है फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट. तो यू विल सी ओवर हियर दैट यूएस गवर्नमेंट ने जो प्राइस बताया है that is $3.072 billion worth of deal. Okay. So अब इसका देखिए प्रोसीजर क्या है. So the procedure is simple. The first is the Defense Acquisition Council has accorded the acceptance of necessity on June 15 for the acquisition of 31 MQ-9. तो इसमें से जो नेवी यूज करेगा ये दो वेरिएंट में होता है. एक होता है स्काई गार्जियन, एक होता है सी गार्जियन. तो जो स्काई गार्जियन है इट विल बी फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स. इट विल 16 इन नंबर. 8 आर्मी के पास जाएंगे, 8 एयरफोर्स के पास जाएंगे. एंड 15 सी गार्जियन इट विल बी फॉर इंडियन नेवी. उसके बाद जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, जो रूट अडॉप्ट किया जाएगा फॉर बाइंग दिस 31 यूएवी, इट इज कॉल्ड एज फॉरेन मिलिट्री सेल. ओके, नाउ इफ यू विल सी जो एओएन में है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द डील इट इज $3,072 million which has been provided by the US government. Now this price will be negotiated once policy approval of the US government is received. उसके बाद जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये जो प्राइस जो है एक्विजिशन का ये कंपेयर करेगी विद अदर कंट्रीज.
That is the second procedure. The next is that the ministry has said that under the FMS route, a letter of request will be sent to the US government where tri services requirements, details of equipment, and terms of procurement will be included. Based on this, the US government and MOD will finalize the letter of offer and acceptance. So इस letter of offer and acceptance में there will be details of equipment and terms of the procurement which will be negotiated and finalized in accordance with the foreign military sale program, and then finally इसको यूएस कांग्रेस की अप्रूवल लगती है, तो इस बार वो हो जाने के बाद ये डील फाइनल हो सकती है. उसके बाद कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. That is, India is also negotiating to increase the indigenous content in the deal from the current 8 to 9% to 15% to 20%, which will be significantly increasing the sourcing from the Indian industry. इसका मतलब जो इंडिजीनियस कंटेंट है, ठीक है ना, उसको इंडिया इसमें बढ़ाना चाहती है. ठीक है, इंडिजीनियस कंटेंट सीधा सीधा मतलब यही है. Indigenization of defense is the one of the major hallmark of the ongoing defense acquisitions in our country. So wherever possible, India is trying to give a focus on the indigenous defense production. Okay, there are two defense corridors in India. Okay, these two defense corridors are in which state? Please write me in the comment box. Now we stick to this news and we come to the explainer series. Okay, so I have already explained you the details of the procedure of buying this UAV. ठीक है, so now we will come to the other advantages of this deal. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो MQ-9B जो है इसके दो वेरिएंट्स है, स्काई गार्जियन, सी गार्जियन. ठीक है, अभी जो MQ-9B है एक डिजाइन हुआ है टू फ्लाई ओवर द होराइजन वायर्स थ्रू अ सैटेलाइट फॉर अप टू 40 आवर्स. ओके, उसके बाद एग्जाम्पल है लाइक सी गार्जियन कॉन्फ़िगरेशन है. इट कैन इंक्लूड अ 360 डिग्री सरफेस सर्च मैरीटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सोनोबॉय मॉनिटरिंग सिस्टम एंड सोनोबॉय डिस्पेंसर्स फॉर परसिस्टेंट एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस. उसके बाद जनरल एटॉमिक्स का कहना है कि द MQ-9B कैन प्रोवाइड रफली 80% ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ लार्ज ह्यूमन फ्लोन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एट अबाउट 20% ऑफ इट्स कॉस्ट पर आवर. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि व्हाई वी आर गोइंग फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल. अब फॉर एग्जांपल सपोज कि आपको किसी मैरीटाइम एरिया का पेट्रोलिंग करना है या रिकॉनेंस करना है, सो इफ वी सेंड अ ह्यूमन फ्लोन मैरीटाइम पेट्रोल, मतलब कि कोई हेलीकॉप्टर है, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई जेट है जो उसको ह्यूमन उसको फ्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इफ द जेट इज बीइंग फ्लाइड तो उसके कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होंगे. ठीक है, पर यहाँ पे जो MQ-9B है वो इस कॉस्ट को रिड्यूस करता है. ओके, तो इट ओनली टेक्स 20% ऑफ द कॉस्ट पर आवर as compared to human flown maritime petrol, and it gives roughly the it covers the area around 80%. Okay, so it makes so it is too much economical for the Indian economy. Okay, so you can see over here. तो इसका देखिए एक और फायदा क्या होता है कि मान लो कि सी गार्जियन ने पेट्रोलिंग कर लिया. ठीक है, अब कोई इंटरेस्ट का चीज कोई दिखा किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे हम ह्यूमन क्रूड एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं. ओके, विच कैन सेव द टाइम ऑफ ह्यूमन क्रूड एयरक्राफ्ट. मतलब हम ह्यूमन क्रूड एयरक्राफ्ट को पूरे पेट्रोलिंग में नहीं लगा रहे, बस एक पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट की चीज दिखी तो सीधा वो वहां पे जाएगी. फाइन, तो इससे जो होता है कि जो वेयर एंड टियर होता है फाइटर जेट्स के और हेलीकॉप्टर्स के, वो काफी बच जाते हैं इससे. तो सपोज so see this line that it significantly reduces the wear and tear on manned aircraft. Its fleet of 12 P-8I long-range maritime patrol aircraft, as well as it reduces crew fatigue, keeping an eye over a wide expanse of Indian Ocean region and beyond. अब आर्मी या एयरफोर्स के लिए देखिए हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल. सो द फर्स्ट इज राउंड द क्लॉक सर्विलेंस लुकिंग फार बियॉन्ड द बॉर्डर्स, फॉर इंस्टेंस ऑन द मूवमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप एंड ट्रूप मूवमेंट along the line of actual control. Then it seamlessly integrates with other US origin platforms which India is operating, such as P-8I, AH-64 Apache attack helicopter, MH-60R multi-role helicopters, among others, expanding डोमेन्स. उसके बाद अगर आप देखें तो इंडियन नेवी ने जनरल एटॉमिक से 2 MQ-9A पहले ही लीज किया था. ओके, और उसने अपना मेडन फ्लाइट लिया था नवंबर 1, 2020 को. तो in their 2 years of operations, this MQ-9A they have completed 10,000 flight hours
and they have helped Indian Navy to cover over 14 million square miles of operating area. उसके बाद एरो इंडिया बेंगलुरु में फरवरी 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल एटॉमिक्स ने अनाउंस किया है जो टर्बो प्रोपेलर इंजन्स है विच विल पावर MQ-9B. इट विल बी सपोर्टेड बाय HAS इंजन डिवीजन फॉर द इंडियन मार्केट. इसका मतलब अगेन दैट इज इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस. उसके बाद ये जो MQ-9 है इट इज successor technology of which technology. तो यहाँ पे if you will see the MQ-9, it is the significant technological leap from the original RQ-1 MQ-1 Predator. Okay, so if you will see this Predator missiles, they were armed with AGM-114 Hellfire missiles, and this became a symbol of US war on terror after the 9/11 attacks. तो इसको US ने use किया है for carrying out operations in Afghanistan and tribal areas of Pakistan in early 2000. ओके, तो RQ-1 जो प्रीडेटर है ये सबसे पहले 1995 में फ्लाई किया गया था और इसको रिटायर किया गया 2018 में. तो उसके बाद एक और है दैट इज कॉल्ड एज रीपर. तो इफ यू विल सी द रीपर, तो रीपर जो है वो प्राइमरीली इंटेलिजेंस कलेक्शन एसेट है, मतलब वो रिकोनेंस करता है. ठीक है, वो कोई डायनामिक एग्जीक्यूशन जो है वो उसका सेकेंडरी टारगेट है. तो प्राइमरी टारगेट इज टू कलेक्ट इंटेलिजेंस. तो ये जो रीपर है इट हैज अ वाइड रेंज सेंसर्स, then significant loiter time, multi-mode communication suite, and precision weapons. So it provides a unique capability to perform strike, coordination, and reconnaissance against high-value, fleeting, and time-sensitive targets. The next is the Titan tragedy. How did the Titanic tourist submersible operate? तो यहाँ पे जो underwater submersible vehicles होते हैं उनके बारे में बात हो रही है. ठीक, तो पहले तो हमें टाइटन और टाइटैनिक का देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम सबमर्सिबल व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे. तो देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स विच सजेस्ट कि टाइटन में पहले से प्रॉब्लम्स कुछ थी जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया. ओके, एंड विच हैज लेड टू दिस करंट ट्रेजेडी. ठीक, तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइटैनिक का ब्रेकेज है कहाँ पे. ठीक, जो ये जहाज थी जो 1912 में डूब गई थी, तो इट वाज द नॉर्थ अटलांटिक ओशन. नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और जो एरिया है उसको हम कहते हैं अराउंड न्यू फाउंडलैंड. न्यू फाउंडलैंड नॉर्थ अमेरिका का एरिया है ये न्यू फाउंडलैंड. न्यू फाउंडलैंड इज ऑल्सो नोन एज फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना, इसको हम फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं न्यू फाउंडलैंड को. तो जब टाइटैनिक डूबी थी तो टोटल कितने लोग मरे थे? करीब करीब 150 लोग, 1,500 लोग मरे थे यहाँ पे. सो नाउ लेट्स सी, पहले टाइटन के बारे में देख लेते हैं. तो टाइटन जो है तो ये जून 18 का है कि जो सबमर्सिबल नेम्ड है टाइटन, इट वेंट मिसिंग. इसमें 4 क्रू मेंबर्स थे और एक पायलट थे. पायलट जो थे वो ओशन गेट जो कंपनी है जो ये टाइटन ऑपरेट करती है उसी के सीईओ थे. उनका नाम था स्टॉकटन रश. फाइन, तो अब ये पता लग रहा है कि देयर वाज अ कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन व्हिच लेड टू द डेथ ऑफ ऑल 5 पर्सन्स हु वर ऑन बोर्ड. अब थोड़ा सा हम टाइटन के बारे में बात करते हैं. तो जो टाइटन है इट इज 6.7 मीटर लॉन्ग मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल फॉर साइट सर्वे, inspection, research and data collection, film and media production, deep sea testing of hardware and software. ओके, तो कंपनी ने कहा कि जो इसके सारे गाइडलाइंस हैं, जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स हैं, fine, so they were all in the line with National Oceanic and Atmospheric Administration guidelines for research, exploration and salvage of RMS Titanic, and as well as UNESCO guidelines for the preservation of underwater World Heritage Sites. तो ये गाइडलाइंस क्या हैं? अगर आप देखें ये गाइडलाइंस, तो ये जो अंडर वाटर जो हेरिटेज होते हैं, जो wrecks होते हैं, उनको बचाने की बात होती है. तो अगर आप देखें जो यूनेस्को का जो गाइडलाइंस है, इट स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज. Okay, and it needs to protect the surrounding waters by ensuring responsible non-intrusive access. मतलब एक्सेस तो है बट वो ब्रेकेज को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करना चाहिए. ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गए टाइटैनिक के पास और टाइटैनिक का कोई पार्ट उखाड़ के लेकर चले आए एज अ सोवेनियर. ये देखो, ओके, दिस थिंग्स आर टोटली प्रोहिबिटेड. अगर आप खास करके इसमें NOAA का गाइडलाइंस देखेंगे तो दे आर सिमिलर एंड दे इंसिस्ट दैट रिकवर्ड मटेरियल एंड आर्टिफैक्ट्स मस्ट बी मैनेज्ड एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. दैट इज इन अदर वर्ड्स, taking souvenirs from the wreckage side is strongly discouraged. Fine. Now, what is the difference between submarine and submersible? तो अगर आप सबमरीन देखोगे तो सबमरीन
थोड़ा सा एडवांस होता है। उसके बाद अपना खुद का प्रोपेलर होता है, खुद का पावर रिजर्व होता है। वो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है। ठीक है, उसको किसी भी बैक सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बड़े जो सबमर्सिबल्स होते हैं इनको बैक सपोर्ट की जरूरत होती है, बिकॉज दे हैव वेरी लेस पावर। अब देखते हैं टाइटन की कहानी थोड़ी सी और। तो टाइटन को देखिए कितना नीचे जाना था। टाइटन को करीब करीब टाइटन को देखिए करीब करीब 3,800 मीटर नीचे जाना था। ठीक है, सो एज यू कैन सी ओवर 3,800 मीटर्स। फाइन। सो अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि जो इसकी पूरी वो थी, डिजाइन थी, खास करके जो हल था इसका, इट वाज जो प्रेशर सर्टिफाइड प्रेशर था वो 1,300 मीटर तक सिर्फ अलाउ कर रहा था। ठीक है, बट ये कितना डीप जाता था, अराउंड 4,000 मीटर्स। फाइन। तो ये एक बात सामने आई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, तो ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, बिलियनियर हमीश हार्दिंग, देन बिजनेसमैन शाजदा दाऊद एंड हिज सन सुलेमान दाऊद। उसके बाद टाइटैनिक के रिसर्चर पॉल हेनरी नार्गोलेट। ये पूरा जो टूर का कॉस्ट होता है एक पर्सन का, वो कितना होता है, $2,50,000। फाइन। उसके बाद ये जो टूर होता है इट टेक्स प्लेस अबाउट 380 नॉटिकल माइल साउथ ऑफ न्यू फाउंडलैंड। ओके, which is very close to where that British passenger liner, that is RMS Titanic, it sank on। देखिए डेट इंपॉर्टेंट है, 15 अप्रैल 1912। और टोटल कितने लोग इस ट्रेजेडी में मरे थे, करीब 1,500 लोग। अब ये जो सबमर्सिबल है, नाउ लेट्स सी। तो ये किसका बना हुआ है, कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का। इसका वेट कितना है, 10,432 किलोमीटर। ये कितना नीचे जा सकता है, अराउंड 4,000 मीटर अंडर सी। और इसकी स्पीड कितनी है, 3 नॉट्स पर आवर। उसके बाद अगर आप देखें तो अब इसमें देखिए प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, 2018 में ओशियन गेट ने अपने एक एम्प्लॉय को फायर किया जिसका नाम था डेविड लॉकहीड। ठीक। तो डेविड लॉकहीड ने अब बताया था कि दैट ये जो सबमर्सिबल है इट वाज ओनली बिल्ट टू अ सर्टिफाइड प्रेशर दैट इज फेल्ट एट 1,300 मीटर्स। मतलब ये उतना ही प्रेशर झेल सकता है जो 1,300 मीटर डीप ओशियन में जो प्रेशर होता है। जब आप 4,000 मीटर नीचे जाओगे तो ऑब्वियसली वो प्रेशर बढ़ जाएगा। गॉट इट। तो वो ये मशीन नहीं झेल सकती। उसके बाद इसके अदर जो कंसर्न्स थे वो थे, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, देन लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हल टेस्टिंग एंड यूज ऑफ हजार्डस फ्लेमेबल मटेरियल्स इनसाइड द सबमर्सिबल। Now let's see the new Vande Bharat train. So the new Vande Bharat train is going to be introduced from Saharanpur to Prayagraj, says Ashwini Vaishnav, who is our railway minister. Fine. Now I was talking about uniform civil code. That is the tribes in Jharkhand and Nagaland. They are protesting against this. Now see, there is a tribal council in Meghalaya, which is Khasi Hills Autonomous District. So they are saying that the uniform civil code, it would affect their customs, traditions, practices, inheritance, marriage and religious freedom of the खासी community। मेघालय में मेजरली 3 कम्युनिटीज हैं। ओके, दैट इज गारो, जैंतिया, खासी। तीनों की खासियत ये है दैट दे आर ऑल मैट्रिलिनियल कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे क्या होता है दैट द, अब देखिए खासीज में खास करके क्या होता है, यहाँ पे जो होता है यंगेस्ट डॉटर, दे बिकम द कस्टेडियन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी एंड a child is given the surname of her or his mother। फाइन। तो खासीज लोग का यहाँ पे कहना है कि जहाँ भी खासी का खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डोमिनेट करती है, द एरियाज गवर्न बाय देम, देयर द यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। नाउ द नेक्स्ट इज विक्रम प्रज्ञान रिटर्न फॉर अनदर ट्रिस्ट विद मून। तो ये नाम जो है वो चंद्रयान 2 से एसोसिएटेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 इट वाज अ लूनार मिशन ऑफ इसरो व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2019। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इट वाज देयर वाज अ विक्रम लैंडर, ओके, एंड प्रज्ञान रोवर। तो विक्रम लैंडर जो था उसकी हार्ड लैंडिंग हुई जिसकी वजह से ये मिशन थोड़ा सा फेल हो गया। सो नाउ चंद्रयान 3 मिशन जो है, नाउ इट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम LVM3 और GSLV Mark 3 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी अ propulsion मॉड्यूल व्हिच विल कैरी द लैंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन टू 100 किलोमीटर lunar orbit। ठीक है, सो वंस द विक्रम लैंडर मॉड्यूल मेक्स इट सेफ्टी टू द मून इट विल डिप्लॉय प्रज्ञान। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ लैंडर रोवर मॉड्यूल जो 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट तक जाएगी। उसके बाद विक्रम लैंडर मॉड्यूल लैंड करेगी मून सरफेस पे और प्रज्ञान जो है वो स्टडी करेगी। ठीक है,
It is a rover, so it will move on the lunar surface to make the scientific study. Now this lander, it has four payloads, that is radio anatomy of moon, bound hyperintensive ionosphere and atmosphere. उसके बाद you have Chandra surface thermophysical experiment. Then you have instrument for lunar seismic activity and laser. Then this six-wheeled rover, it will have two payloads. Rover मतलब प्रज्ञान, that is alpha particle X-ray spectrometer and laser induced breakdown spectroscope. Addition to this, there will be one payload on the propulsion module also, that is the spectropaliometry of habitable planet Earth, that is SHIP. Now coming to the Wagner Group. So if you will see, let's take the fine points from here. That is, heavily armed Russian mercenaries have withdrew from the southern Russian city of Rostov overnight under a deal that have diffused an unprecedented challenge to Vladimir Putin. ओके, अब यहाँ पे एक जो और डील है जो फ्रंट पेज पे हमने पढ़ा था, दैट येवने प्रिगोजिन ही विल मूव टू बेलारूस. फाइन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो वैगनर ग्रुप का जो रोल है इन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया और फाइटिंग अलोंगसाइड द रशियन बैक्ड रेबल्स इन लुहांस्क रीजन. ओके, सो दिस हैज बीन क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड, मुझे ये बहुत ज्यादा रहा है. पर उसके बाद यहाँ पे the same group has started. First they captured Rostov on Don in Russia. Okay, this is a southern military town in Russia, and then they started moving towards Moscow. So let's see. Continuing with this, जो Yevgeny Prigozhin है, he's the head of the Wagner private military company, which launched a March for Justice. March for Justice क्या है? ये जो पूरा जो company है Wagner Group का, when it was marching towards Moscow. So before that, they had taken over the southern military district and some other administrative buildings in Rostov-on-Don. Fine. उसके बाद अगर हम देखें, Mr. Prigozhin, he blames the corrupt and incompetent Ministry of Defense leadership for Russia's poor performance in Ukraine war. खास करके इन्होंने जो है पर्टिकुलरली जो क्रिटिसाइज किया है वो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगो एंड चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव. Now let's take this one-liner from sports. So Diksha Dagar, she has won her second Ladies European Tour title with the commanding four-shot win in the tip sports Czech Ladies Open at the Royal Baron Golf Club on Sunday. So she has claimed the Czech Ladies Open title. यहाँ पे हमें ये याद रखना है जो इनका second Ladies European title है. The next is Alcaraz is now again number one in the ATP ranking after winning the Queen's Club title and returning to the world number one. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.